as the head of retail payment product solutions. He has previously worked in Ooredoo, Myanmar as a product and services senior manager. So he's also worked in Wave Money as head of back office operations. Um, Telenor, Bank Alvila, very good experience. I now hand over the mic to Mr. Syed Burhan. Yes, please. Thank you. So thank you everyone for joining. Because like I was not expecting कि इतने लोग join करेंगे because the topic is very dry and I think I'm sharing the wrong window. But trust me, you will learn something. जो है, is my screen visible? Like, can you see my screen? Yes, we can. Okay, perfect. So as Yusra has mentioned that I am currently working as a senior vice president and head of product solution in Bank Alfala. I'm also doing my executive MBA from LUMS. So I will be graduating in 2025. So this is my career journey that I will discuss later. So what I have done, I have divided my session into the two part. One part is the digital financial services, and the other part would be like the career, that like what should you do, like if you wanted to come to the digital financial services, what are the skills that you need, and like when you prepare your CV, what are the things that you should keep in your mind, and when you go for an interview, so what are the things that you should consider, that like you should not do this. So without wasting any time, so anyone who knows like what is a digital financial services? I know it's a non-CP class, so but I would appreciate if you guys speak up, because you know that it will when you speak, because you all guys have come here to learn something, and when you speak, you ask questions, so you definitely learn something new. Anyone? Okay. Does anyone have idea? I think you have to tell them, Burhan. Okay, no problem, no problem. So, digital financial services, that whenever we use any digital tool to perform the financial transaction, this is the digital financial services that include the like your mobile phone, the smartphone, mobile apps, ATM machine, point of sale terminals. So these all are the like the web page that you use to perform the online transaction. So these all are the digital financial services. If I talk about the digital financial services, that how it has evolved with the passage of time. So in 1960, we have the ATM, and then from 1970 to 1980, we have a mainframe computer. So mainframe computer is usually used for performing the transaction, like the high volume transaction. So we can call it a supercomputer like this. And then in 1990, we have the online banking. And then 2020, early 2020, we have the mobile banking. So 2026, I have highlighted this because that is very important that I want to discuss here. That is a branchless banking. So that started in Kenya with M-Pesa. Pakistan, it came in 2009 when the Easy Pesa came in Pakistan. The Telenor launched here in Pakistan. And because it has helped a lot to unbank the bank people. So because earlier it was so difficult for people to perform any financial transaction, they have to go to the bank to perform the transaction, but now they can open their wallet and then they can perform the transaction. And then after that in mid 2010, we have the fintechs, digital payment solution. Then we see again that the things are evolving, that in 2015 we have an open banking platform that we allow a third party to integrate. So usually what used to happen, that like the banks or the financial institute, like they were not much open, so they were like they don't allow any third party to integrate with their system. But now we don't treat third parties as our competition, but we treat them as our potential partner, because it create a new value and the revenue stream for us. And then we have the late 2020, we have the biometric authentication. Even for example, for whenever you open any bank account, you have to do your biometric another verisis to authenticate that like it's you. And then in 2020, we have the blockchain, the cryptocurrency, and all the things. Although
these features are not available and applicable in Pakistan, but still this is happening around the world. The importance again that it reaches to the unbanked people. So because the banks have a limited branches, but and they will not have branches in rural areas, but with the digital payments and with the digital services, you can open your wallet from anywhere. And again, when you perform any financial transaction, so it add value to your economic growth. So these are the current trend we have in financial services, digital financial services. So we see that the AI and the machine learning that is being used a lot. That, for example, that we create a chatbot, virtual assistants for fraud detection and prevention. Things that are happening a lot, that you as a user you might not know that what is happening at backend, but at backend there are the platforms that uses this the AI and the tools that helps to prevent any fraud, to mitigate any fraud. And then again, we have a personalized finance product. We have open banking, digital payment, embedded finance. So embedded finance means that when you enable financial services into the non financial services app, for example, that if you have a Daraz a mobile app, or you performing anything and you perform the transaction, or you perform mobile top up from there, or you pay your utility bills from the Daraz app. So this is the embedded finance. Blockchain and decentralized finance, again, that is not applicable in Pakistan, but around the world it is happening. And the focus on financial wellness and inclusion that is happening in Pakistan. So we have a different platform that allow uh, uh, their users to interact with the doctors and have the consultation and all the things. And even uh, there are multiple NGOs, those who are working on creating a digital financial services solution that help to create financial literacy and uh, underserve the community. But if I talk about primarily for the Pakistan, so it's we are more focusing on the wallet. We are focusing on the contactless payments. So like you don't need to, for example, that when you go to Sapphire or any other shop, so you want to perform you want to make any payment. So what they used to do that, like for example, they collect your card and then they insert your card into the POS machine. So, but now the things have changed a lot. So now uh, we have a POS. POS is a point of sale terminal. So you just tap your card and the transaction is complete. Or for example, that your phone become your POS point of sale terminal. So where if you have a NFC phone, so you don't need to have the POS machine. So you can accept payment on your smartphone. And the last thing is that here we are so much focusing on the customer experience, because uh, everyone is offering the same product. So it is only that if you are offering a better customer experience, then customer retain to you. Otherwise, they will just move to any other operator. So these are the current the trends that I'm just discussing on a high level. So we can discuss later. Like if you have any query, maybe in a question answer session. So in digital payments channels, so this is what I have prepared as compared with reference to the Pakistan. So in Pakistan, we have three medium. One is a branchless banking, that we have wallets, Easy Paisa, Jazz Cash, Sada Pay, Naya Pay. And then we have online payments, the online payments that whenever you go to any website and you wanted to pay something, so these are the online payments. Or even if you wanted to pay for your Food Panda order, so this is the all online payments gateway. So there are multiple gateway, but the famous ones are the MPGS, that is a Mastercard payment gateway. CyberSource is from the Visa, and the BPC is from the Netherlands. And then we have the physical card payment, that is we call it a point of sale terminals. Again, we have a physical POS, we have a mobile POS, and we have the tap and pay. You just tap and the transaction has been completed. What next? Wait. What is Okay, so anyone, if they can tell me that whenever you open your wallet, do you think that that your funds are secure, or how secure are your fund? Anyone?
Okay, no problem. So what happened? That the first of all, that any entity, those who wanted to offer wallet services, they have to obtain a State Bank approval. After securing the State Bank approval, they need to open a trust bank account into the commercial bank, and they have to maintain amount equivalent to the amount that they offer to the customer. So, for example, that if I have, for example, if EasyPesa has, for example, 100 wallet users and they have a total 1,000 rupees in total wallet account. So, in physical, in a bank account, it should be 1,000, and every day they have to report this to the State Bank of Pakistan, that they have to reconcile it, and they have to share it with the State Bank, that like they are compliant. If there is any mismatch, then it will create a problem, or maybe they can be penalized for this issue. I will not go to the so because you guys are so silent, so I will not just go to the detail. So like I just wanted to highlight here that like I had one project on my innovation and technology class, so where we have to improve the customer experience of any product. So I have selected the Bank Alpha app, that I wanted to improve their experience. So what I have done, I have created a three different customer segment, like young, Gen Z, the businessmen. So these are the Gen Y, and the traditional bank user, those who are using the bank services, but they are not using any digital channel. And I have a very interesting insight from these people, that for me, I wanted to understand that like what are the features they like, what are the frustration point they have, what are their sentiments that when they perform any financial transaction. So there was a four major concern that they had, that like they struggle with user interface, that it was very difficult to identify the options. They had a concern on the security, for example, that they don't want a two-factor authentication. That for example, two-factor authentication means that whenever you want to perform a transaction, so they ask you that you have to enter the mobile number or OTP or the email address. So this is the concern they had. Then the app slowness. So this is the app slowness, and the security was the concern from the Gen Z, that they wanted to have the very robust app, that like you just click and the transaction happens. And again, they don't want a 2FA. They just want that you enter the amount and the transaction should be successful. And then they had a detailed wish list, that there should be so many features, so many use cases to the app, so they don't need to go to the bank branch, or they don't need to go to anywhere to perform the transaction. So these were the a different segment expectation, that like the Gen Z or the millennial, they want a fast processing app with a zero downtime. Downtime means that like whenever you try to perform the transaction, but the app is not working. Or they don't want a 2FA, they want maximum use cases. The salaried people, because or the businessmen, they wanted to have the higher security. And with the traditional the people, the old age, since they are not, they feel that they are not very tech savvy, so they wanted to have a very simple UI. And but the overall, the common theme was that they wanted to have the simple and the convenient user interface. So these are the some number that we have, that for example in Pakistan we have 60 to 65 people percentage population that is below 30. So we call them the Gen Z. And if I see the wallet intake trend, so we have approximately 37 people, Gen Z people, those who are using the different wallet. And if you see the month by month growth, either it's a Jazz Cash, Easy Paisa or Sada Pay, you see year to year growth that is happening every year. So in my project, so what I have proposed, that that we should have a very simple UI UX. So for example, that if you use any financial app, either it's a Easy Pesa, Jazz Cash, or any app, so there are so many options, and you don't use it. So you use just four or five options. Either it's a send money, mobile top up,
bill payment, that's it. So in my project, I have proposed that like there should be only four feature, and the rest, if they want, they go to the other option, and then from there they can do it. And for the Gen Z people, we propose that like they can perform the transaction. They can set the limit that if they don't want 2FA, they can set the amount that, for example, up to 10,000, they can perform transaction without 2FA. Otherwise, it was totally on their control. And then we talk about the card payments. So there are different myths about the card payment, that the card payments are not secure. Using a credit card online is more riskier. If we use debit card, it is safe as compared to the credit card, because like in debit card, if I have a money in my account, then I can only use the debit card, whereas in credit card we have a credit limit. So there are multiple myths about the card payment, but in actual the things are very different. So the first of all, the our systems are not fully secure, although that we are using the TSL, the services, and again, either it's an online or in-store transaction, there is still a risk. And but we always advise that you use credit card instead of the debit card. The reason for using this is that most of the scheme means the Visa and the Mastercard, or the JPC and the Union Pay, etc. So they have a no liability shift. It means that if there is any fraud happen to your card, you will not be responsible. So either your bank will be pay you back, or your the merchant from where you have performed the transaction, they will refund you money. So it is always advised that you use credit card as compared to the debit card. Again, these transactions are completely secure, but again, it depends that from where you are performing the transaction. If I go to the, for example, that if in most of the I took this screenshot from the, I think from Khadi or Sapphire, I don't know. So if you see here, so you can see here that it shows that that this is verified by the PCI DSS compliant. So you will on the checkout page, when you are entering your card detail, you will see this. So you means that like it's a very secure website, or you will see that secure by Visa, or you will see that 3D secure transaction. So this all means that your transaction is safe, your card payment is safe, so you should not be worried. You can easily perform the transaction. So these are the different type of online e-commerce transaction: B2B, B2C, B2G, C2C. C2C means person to person, consumer to business, C2B, and the C2G. So these are different type of e-commerce transaction that we perform. And as I have mentioned, the payments security. So there are three types of security that we have. One is a TSL, and other is the PCI DSS compliant, and the third is 3D secure. So TSL means that like earlier it used to be SSL, and now it's been obsolete. So now we have a TSL. So if you see here, you see HTTPS. So that shows that your website is secure. So this TSL, what they do, they do the authentication and the encryption, so your data is secure. When we talk about the PCI DSS, that is a payment card industry standards. So here there are different requirement that any entity has to do to be PCI DSS compliant. So it means, so when we say PCI DSS compliant, it means that anyone, uh, no one can store your card information online if they are not PCI DSS compliant. So as I have mentioned here, if I go back to here, so for example, here it shows that PCI DSS compliant. It means that like they have a very secure website, and they have a license that like they can store the customer card. And if they are not PCI DSS compliant, then they cannot store your card. So, and if they try to store your card, then the schemes like the Visa card, Mastercard, they will, uh, because they monitor from the backend, and then they can penalize the merchant or the bank, those who have onboarded the merchant. So your card information is purely secure when you perform the online transaction.
So the last thing is so in e-com transaction. So earlier there used to be a 2D transaction. The 2D means the two-dimension transaction where there used to be only the bank whose platform is being used and the merchant from where you're buying things. But now it's been upgraded to the 3D. 3D means the three dimension. It means that now the three parties are involved. One is the bank whose platform is being used, the second is the merchant, and the third is the issuer. Issuer means that whose card you are using. For example, if you have a Bank Alpha card, it means that the third party issuer is Bank Alpha. So why what is the difference between the 2D and 3D? So in 2D, there is no authentication. You just enter your card detail, you enter your CVV, and transaction is complete. But in 3D transaction, so whenever you try to perform the transaction, you receive the OTP. So your here the issuer bank jumps in, they send the OTP on your registered number, and then you when you enter the OTP, then the transaction is secure. And in Pakistan, we only allow the 3D transaction, so we don't allow any 2D transaction. So all of the 3D transactions, so your money is secure, and your there can't be any unauthorized online transaction on your card. So then we have the point of sale terminal. In point of sale terminal, whenever you go to any fuel station, whenever you go to any restaurant, whenever you go to any shopping mall, you see this POS machine to perform the transaction. This POS machine looks same, that like you don't see any difference, but at backend, like all POS machines are different. All the POS machine features are different. So for example, that if you're going to the restaurant, they will have a different user, the feature, for example, that where they can pay their bill, they can offer tip. But if you're going to the any retail outlet, there will not be any tip option. Or if you're going to any fuel station, there will not be any tip option. So there are different feature that we have, and again there are different rules and limits assigned against each segment. For example, that if it's a fuel station, there will be a different limit, that for example you can charge your card X a number of time, and this is the total amount that you can perform. So that is totally different. And again, in the card transaction, there's a physical card. Now there is a variable also. Variable, when we say variable, it means that your Samsung Pay or your Apple Watch, Apple Pay. So although in Pakistan, none of the bank allow this variable, so you cannot store your card here. But if you have an overseas card and you have stored your, and if you have created your Apple Pay account, so you can use your watch to perform the transaction or pay any amount. So not any amount, it's a maximum 50,000. So if you are performing the contactless transaction through your card, so the transaction limit is 5,000, that is without PIN. And if you are performing transaction through your variable, then that is a limit up to 50,000. So in Pakistan, we only allow the EMV chip cards. So if you see here, so all the cards are EMV chip in Pakistan. So these are the EMV, means that Euromoney, Mastercard, and Visa, and Europay, and like we don't allow this magnetic strip. If you see on your on backside of your card, this is a magnetic strip. So we don't allow any transaction that has happened on the magnetic strip. So if I can show you that this is the evolution of the POS machine. So it used to be in early, it used to be a physical machine where you used to keep the paper, and it used to print like and then you have to send manually paper to the bank, and then they perform the transaction. And then we have the 2G no, not 2G actually. First, we have a dial-up machines that you have to connect the phone wire or the LAN wire to connect to the internet. Then we have the 2G machine, and then we have the 3G machine, and now we have the Android terminals that which are 4G and are capable of doing a lot of things. So this is the cycle that whenever you
being a customer, whenever you try to perform a transaction, it doesn't matter that if it's an online transaction or the physical card transaction, that you go to the merchant, that you want to perform the transaction, merchant send the request to the acquiring bank whose platform is being used. Acquiring bank send the request to the card associate, it means the scheme. It can be Visa, it can be MasterCard. And then the scheme send the request to the issuing bank. For example, that uh, if you are, for example, if you're using your card on Food Panda, so Food Panda is using the Bank Alpha. So here, like you are a customer, you go to Food Panda, you order. Food Panda send the request to the Bank Alpha. Bank Alpha send the request to the MasterCard, and then that you might be have a HPL card, MCB card, or any other card. So what will happen that MasterCard will send a request to the HBL or MCB, whoever card you have, and then they will check that if the card is valid, card has a limit. So they will check everything, and then they respond back to the MasterCard. MasterCard will respond to the Bank Alpha. Bank Alpha will respond to the customer that the transaction will be successful. So, and everything has happened in a millisecond. So like customer don't see this what is happening, but at backend so many things are happening on the backside. So this is very important. So whenever you perform any financial transaction, so you also face disputes. So there are two type of dispute that we have. One is a fraud, and other is that, like you say, that you have done online shopping, but you have not received the goods, or even if you have received the goods, the goods were very was not as it was advertised, or it was damaged. So so uh, customer can initiate such dispute within 120 days of the transaction. So it is not necessary that you have to you have to initiate within 1 day or 1 week. So you have a 120 days to initiate any transaction. And then so what happened that, for example, if I'm a customer, I order something from the Draz and I don't receive the goods. So I call my bank. For example, I use a Bank Alpha card. So I call my helpline Bank Alpha that I have not received my goods. Bank Alpha will log my complaint, and then they will send a request to the scheme because which they are using. It can be MasterCard, it can be Visa. And then the MasterCard will send the request to the relevant bank whose card was used. For example, that if someone has used the HPL card to perform the online transaction and he has not received the good, so the request will go to the HBL, for example. And then HPL will send a request to the merchant, for example, to the Dras, that the customer has performed the transaction and he has not received the goods. Please provide, and this is a dispute. Please provide a evidence that you have delivered the goods. So here, merchants will have a 30 calendar days if the Visa card is being used, and 45 days if the MasterCard card is being used to respond. So I see that people create panic. They whenever they launch any dispute, they say that I have not received the refund, and they say that, oh, it's been a 1 day, it's been a 1 week or 2 week, I have not received anything. So these are the international schemes guideline that merchant has a minimum 30 day to 45 days that they have to respond back. So usually, if you file any dispute, it takes approximately 2 months to get a refund. So, but what happened that sometimes merchants on a good faith they return you your amount, or the bank return you the amount, but in actual the bank receives the amount in 60 days minimum. So this is very important that and that is very interesting that when people lodge a dispute, for example, in COVID case, one of the customers, like, he booked a flight to Canada, and the in COVID it was that, like, you have to leave the next seat empty, so to maintain some distance. And but the airline, they don't kept that distance, so like the passenger was sitting next to each other, so there was no empty seat. So when he reached to Canada, he lodged a complaint that the airline didn't follow the protocol, and I feel very insecure, so I need my refund. And he won the case. uh,
Or I give you another example that one of the lady, she ordered cloth from the one of the leading brand from Pakistan to abroad, and when she received the her clothes there, so there was some वो कहते हैं ना कि वो जो है वो निशान रह जाते हैं पिन वगैरह के साथ उन्होंने लगाए होते हैं तो and she lodged a complaint that like there is some जो है कुछ निशान वगैरह हैं जो आपने वो पैक करते हुए लगाए हुए होते हैं तो और उस जब वैन मर्चेंट से रब्ता किया उसने कहा कि जी कि यस वो हो जाता है क्योंकि हम इसको जो है जब हम पैक करते हैं तो हम वो पिन वगैरह लगाते हैं तो but because customer has mentioned that we have done this, so again she won the case and she got the full amount. So she got the cloth as well and she got the the refund as well. So there are very interesting cases when we talk about the dispute. But again, yeah, there are some genuine cases as well that where people actually suffer. But again, it takes time to receive your refund. You just need to be a bit have some patience here. The future trend again on the financial services, we have contactless payments, biometric authentication, IoT, and the last thing is the blockchain and digital currencies. In Pakistan, we have a contactless payments, we have a biometric authentication, we have IoT, but we don't have a blockchain or digital currencies. Blockchain we don't have because like in bank, usually a central bank, they want it, or the state bank, they wanted to have a control with themselves. So in blockchain, it's not a centralized, it's a decentralized thing. So they will not have a control. So that is the reason that most of the countries that is it is not allowed to use the blockchain because and the state bank or the central bank doesn't have a control here. Yes, Asad, you wanted to ask anything. Good to at least Uh, hear. yeah, yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you. So first of all, thank you for the great session. It's very informative. और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि just relating to this last point, Mhm. in a lot of countries, like isn't crypto legal in the sense कि आपको बस अपनी income के तौर पे उसको report करनी होती है, and that in some ways becomes a taxable source of revenue for the government as well. So do you think it's possible to maybe implement something of that sort in Pakistan? असद सो देखें पाकिस्तान में जो है सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है केवाईसी, नो योर कस्टमर। जी व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लॉकचेन तो केवाईसी इज अ जो है ना वो बहुत बड़ा जो है हर्डल है क्योंकि बाहर के मुल्कों में चीज़ें फिर भी बहुत जो है डिसिप्लिन्ड हैं और अभी हम लोग जो हैं अभी ग्रे लिस्ट से हम लोग निकले थे फेटफ की लिस्ट में से सो व्हाट आई फील इन माय पर्सनल व्यू दैट गवर्नमेंट डजंट वांट टू गो टू दैट डिटेल बिकॉज ये जो है ब्लॉकचेन से जो है यू डोंट नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ से जा रहा है बिकॉज जो है इवेंचुअली जो स्टेट बैंक है उसके पास कोई नहीं है क्योंकि देखें बाकी जितने भी बैंक होते हैं वो स्टेट बैंक उनको जो मॉनिटर कर रहा होता है। हर बैंक हर कंट्री की अपनी रेगुलेशन होती है, उसके अपनी पॉलिसीज होती है बैंकिंग पॉलिसीज और उसके हिसाब से वो चले होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लॉकचेन तो ये एक डिसेंट्रलाइज जो है लेजर है जिसके अंदर जो है नो वन हैज़ अ कंट्रोल कि जो है ना कि आप इसको जो है ना कि आप इसको मॉनिटर कर सकें, इसको जो है गवर्न कर सकें। तो दैट इज़ द रीज़न कि जो है मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो है वी कैन डू दिस इन पाकिस्तान एंड अगेन स्पेशली देखें डोमेस्टिक में तो शायद थोड़ा बहुत यूज हो भी जाए बट व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटवर्ड रेमिटेंस के जो है पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो कि जी कि जो पैसा बाहर जा रहा है क्या पर्पस है उसका, तो इट कैन क्रिएट सो मेनी इश्यूज। Okay, perfect. Thank you. अच्छा जी फ्यूचर आउटलुक एंड रिकमेंडेशन अगेन दैट इज contactless payments जो है अच्छा when I say about the contactless payments so I just I forget to mention one thing so what happened that for example when you perform any transaction on your food panda तो वो उसमें एक ऑप्शन होती है कि like do you want to store your card, तो जब आप अपना कार्ड स्टोर कर लेते हैं so you don't need to enter your card detail again, so what happened कि आपके कार्ड के अगेंस्ट जो है ना वो एक टोकन बना देते हैं। तो
अभी उसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, गेटवे टोकन कहते हैं। क्या होता है कि जी के आपकी जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो उसको वो उस वक्त ही जो है सिर्फ डिक्रिप्ट करता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। यानी कि इट्स समथिंग लाइक कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड को एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ है, जब आपने ट्रांजैक्शन करनी है तभी आप उसको बॉक्स को खोलेंगे और इसमें से ट्रांजैक्शन करेंगे और दोबारा बीच में रख देंगे। बट अभी स्कीम जो है आइदर वीज़ा और मास्टर कार्ड, वीज़ा ने मैंडेट दिया है कि बाय अक्टूबर 2024 इस ईयर हमने इसको गेटवे टोकन पे शिफ्ट करना है, और मास्टर कार्ड का है अगले साल मार्च का। सो द डिफरेंस बिटवीन द द गेटवे टोकन एंड द नेटवर्क टोकन, इसके गेटवे टोकन में क्या होता है कि आप जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपने एक कार्ड को इनक्रिप्ट करके अपने पास रखा होता है, बट जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन करनी होती है आप उसको डिक्रिप्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, दोबारा से उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। बट नेटवर्क टोकन के अंदर क्या होता है कि जी कि आपका कार्ड जो है इनक्रिप्ट ही रहता है, वो डिक्रिप्ट नहीं होता। तो यानी कि जो है अब जो स्कीम्स हैं वो उस चीज़ पे कस्टमर सिक्योरिटी पे जो है पेमेंट सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो अब ये जो है, और एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मैंडेट इट मीन दैट वी हैव टू कंप्लाई विद दिस। तो इफ द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डजंट कंप्लाई विद द स्कीम मैंडेट, तो उसके बाद जो है स्कीम्स जो है उनको जो है पेनलाइज करती हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो वी हैव टू इंश्योर कि जो है कि अगर हम वीज़ा का कार्ड यूज़ हो रहा है तो हम उसको जो है अक्टूबर तक हम उसको कंप्लाई कर दें, और अगर मास्टर कार्ड है तो वो हम उसको जो है मार्च 2025 तक हम उसको कंप्लीट करते हैं। द लास्ट थिंग इज़ दैट कुछ कंट्रीज़ में जो है सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसीज भी जो है ऑफ़र करना स्टार्ट कर दी हैं। पाकिस्तान में भी जो है अभी लाइक आई हैव रेड एंड डिफरेंट आर्टिकल्स के जी काम हो रहा है, बट आई डोंट हैव एनी अपडेट के जी के हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये इवेंचुअली द फ्यूचर वुड बी कि जो है कि आपका जो स्टेट बैंक है वो डिजिटल करेंसीज जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे अभी जो है फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रास्त की, बात करते हैं रास्त में पहले P2P था, अब जो है स्टेट बैंक जो है P2M यानी कि पेमेंट टू मर्चेंट उस पे भी काम कर रहा है। तो लाइक स्टेट बैंक हैज़ टेकन सो मेनी इनिशिएटिव, या फॉर एग्जांपल जो है उन्होंने जो है अकाउंट ओपनिंग को बहुत सिंपल कर दिया है कि यू जस्ट नीड टू सबमिट योर CNIC एंड योर सेल्फी एंड देन यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट। तो आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे या ऐप पे जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक इज़ वेरी सीरियस अबाउट लाइक promoting the digital financial services, और बहुत कुछ हो रहा है, and you will see a change maybe like within 1 or 2 years. अच्छा जी, skills and knowledge required to excel in a digital financial services। तो uh, अब when we talk about digital financial services तो इसमें जो है it is not something related के जो है कि आपको जो है like if you studied accounting या आपने finance पढ़ा है तो तभी आप इसमें fit हो सकते हैं। तो like if you have not studied this तो आप फिर भी जो है like there are you can go to the marketing, you can go to the HR, you can go to the customer experience, you can go to the strategy, you can go to the product development. So there are so many things that you can do even if you don't have financial services background. And again the skills that usually जो हम hardcore skill देख रहे होते हैं वो है data analytics है, programming है, cyber security है, and I see a great potential in cyber security because the things are moving a lot to the digital side, के जहाँ पे we have the AI, ChatGPT and Gemini and all the things, but to monitor everything we need to have the infosec team, those who ensure कि जी आपके platforms जो secure हैं। तो and again if you have empathy factor in you तो आप customer experience में जा सकते हैं, you can focus on the customer centric approach because eventually as I have mentioned कि सब जितनी भी कंपनीज हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तकरीबन समहाउ एक ही जो है प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, सेंड मनी, रिसीव मनी, मोबाइल टॉप अप, बिल पेमेंट, लोन एक्सेट्रा। इट्स ऑल अबाउट के जी कि आपको जो है अच्छी यूजर एक्सपीरियंस कौन दे रहा है। तो आजकल इस पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस हो रहा है। आप स्किल कैसे गेन कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग करें, मेंटरशिप करें, एंड आई एम्फसाइज हियर के जी के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है आप जो है लोग आइडेंटिफाई करें कि जिनसे आप कुछ सीख सकें, क्योंकि लाइक यू कैन रीड बुक, यू कैन डू ऑनलाइन कोर्सेज, बट जो है ना उसमें क्या होता है कि इट्स जस्ट अ वन वे
थिंग कि जो कोर्स कंटेंट में है वो ही आपने किया, जो आपकी क्वेरीज हैं वो एड्रेस नहीं होती। सो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है मेंटर्स आइडेंटिफाई करें, आप इंटर्नशिप्स करें, बिकॉज जब आप इंटर्नशिप करते हैं अगेन आपकी एक अच्छी नेटवर्किंग होती है। और मैंने देखा है कि हमारे पास जितने भी लोग इंटर्नशिप करने आते हैं यूजुअली हम उन्हीं को जो है ना हम प्रेफर करते हैं, हम उनको जो है वो हायर कर लेते हैं। अच्छा, प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, तो यहाँ पे जो है आई वुड नीड योर कमेंट के जी व्हेन यू wanted to pursue any career, so what is your inspiration and why? Because like I give example कि अभी जो है समर इंटर्नशिप्स चल रही थी एंड आई इंटरव्यूड सो मेनी पीपल इवन फ्रॉम द लम्स आल्सो जो इंटर्नशिप के लिए आए थे, एंड पीपल लाइक दे वर वेरी मच इंक्लाइन कि जी उन्होंने मार्केटिंग में जाना है या एचआर में जाना है, एंड लाइक because I was on the other side, so I have to be very transparent and I have to be very unbiased, तो I just hear their thought, but मेरे ख्याल में जो है कि you need to see कि जी कि future किस चीज़ का है and where you have a growth. So I'm not discouraging marketing at all या कोई और डिसिप्लिन, जो चीज़ भी आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी डिसिप्लिन आप सिलेक्ट करते हैं, यू हैव टू इंश्योर कि आप जो है कि इसका कोई फ्यूचर ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय कस्टमर जर्नी, सॉरी नॉट कस्टमर जर्नी, माय करियर जर्नी, दैट आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम 2009 फ्रॉम द एज अ कॉल सेंटर ऑफिसर from the PCL, and then I joined Telenor Easy Pesa in 2009. So I was the pioneer one and in Easy Pesa. Then in 2012, I moved to Telenor Group. I was based in Thailand and Dubai. Then I took an emotional decision. I resigned and returned to Pakistan and joined Bank Alfala. In Branches Banking, we were launching Mobile Pesa here in Pakistan. But in 2015, again, Telenor was launching financial services in Myanmar and Malaysia. So again, they contacted me that if I'm interested, and then they offered me a 3 position के कोई सी भी select कर लें, and I selected कि जी मुझे जो है ना सिस्टम एंड प्रोसेस में आप मुझे हायर कर लें. So I worked there till 2015 में ही मैंने स्विच करके वेव मनी में चला गया था. वेव मनी इज एक्चुअली अ सब्सिडरी ऑफ टेलनॉर. और उसके बाद 2021 में मैंने ओरिडू ज्वाइन कर. ओरिडू इज अ कतर बेस्ड कंपनी. दे आर आल्सो ऑपरेटिंग in 11 to 13 countries. It's a very huge group. So the reason why I moved to Ooredoo, because like I was I was heading the operations and the cash management. तो I felt कि ये with the passive time ये चीज़ें जो है ना obsolete हो जाएंगी. Like you will not have a growth. So it's very important कि जो है कि you upgrade your skill, and अगर आपको अपना जो करियर थोड़ा शिफ्ट करना है तो आप वो भी कर लें. So I moved to the product because eventually आपने कुछ भी करना है तो आप प्रोडक्ट इज द थिंग. और प्रोडक्ट में इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं कि आप प्रोडक्ट में रह के जो है आप प्रोडक्ट डिज़ाइंस करते हैं और उस पर जो है आप ग्रो करते हैं. And then I decided to return to Pakistan, although they asked me to move to Qatar, but it was I had my family reasons कि I decided to return and joined Bank Alfla. Now I'm working as a senior vice president and a head of product solution in retail payments. So here, so this is the CV I have received from one of the undergraduate students. So I have just changed everything. I just mentioned my name here, my cell number, my LinkedIn profile or something. So I just wanted to give you a flavor that whenever you are preparing a CV, so what things you should keep. For example, that if you see here, अगर कोई मुझे वैसे बता दे कि like what are their observation के इस सीवी में उनको क्या गलतियां नजर आ रही हैं, अच्छा शायद आप बता दें. बिकॉज यू स्पोक अप तो मैं शायद आपको दोबारा डिस्टर्ब करूं. हाँ नहीं, no problem. So I feel like एक तो this isn't really using the space effectively. थोड़ी सी कुछ जगहों पे misalignments हैं और just बहुत inconsistent formatting है, so it kind of makes it feel like जो शख्स apply कर रहे हैं they're not very detail oriented perhaps. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. आपने बिल्कुल सही जो है वो पॉइंट आउट किया, क्योंकि देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हमारे पास सीवी आता है कि लाइक हम लोग जो है सिर्फ स्किम करते हैं, वी डोंट गो टू द लाइन बाय लाइन के जी क्या लिखा हुआ है, ठीक है. और हम उसमें यही देखते हैं कि यार कि जो है कि इसने क्योंकि लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर सीवी यू डोंट फ्लाई विद योर डॉक्यूमेंट. तो आपका सीवी हमारे पास आता है
CV से ही हम आपको जो है जज करते हैं कि शुड आई वी कॉल यू फॉर इंटरव्यू, यस और नो। तो अगर आप यहाँ देखें कि फॉर एग्जांपल वो जो वो कैंडिडेट थे, उन्होंने जो है 2028 टू 202, यानी कि यहाँ पे टाइपो, देयर वाज अ टाइपो। एंड देन अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखते हैं 2024 टू प्रेजेंट, कहीं पे उन्होंने डेट्स जो है कंसिस्टेंट डेट नहीं है कब से कब तक उन्होंने काम किया। दूसरा उन्होंने जो है लाइक बिकॉज द कैंडिडेट वाज द फ्रेश स्टिल अ स्टूडेंट, तो वी अंडरस्टैंड कि जी दे डोंट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, बट अभी जितना भी उन्होंने काम किया दे हैव नॉट क्वांटिफाइड कि जी के उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल वो इस सोसाइटी में थे तो उनका जो है आउटकम क्या था, दैट वाज मिसिंग। एंड देन स्पेलिंग मिस्टेक्स, रूट्स कॉजेज। तो ये चीज़ें जो है ना हमें पता चल जाता है कि यार कि जो है कि आप, और स्पेशली जब आप एक वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और आप इस तरह की जो है आप जो है गलतियां कर रहे हैं, तो इट डजेंट ऐड मच, जो एक अच्छा इंप्रेशन जो क्रिएट नहीं होता। तो ये जो है यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी CV प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप उसको 2-3 दफ़ा पढ़ें, इसकी प्रूफ रीडिंग करें, किसी अपने दोस्त से कहें कि वो एक दफ़ा रिव्यू कर ले, आप किसी सीनियर को कह दें, अपने टीचर को कह दें, ताकि जो है और जो भी कुछ लिख रहे हैं आप उसमें क्वांटिफाई ज़रूर करें, ठीक है? आपने जो कुछ भी किया है उसमें अपनी अचीवमेंट ज़रूर शो करवाएँ कि जी कि आपने किया, और मेक श्योर करें कि आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, टाइपोज़ ना हो। तो क्योंकि इससे हमें पता चलता, हम लाइक एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि यार लाइक दे आर नॉट वेरी डिटेल ओरिएंटेड और दे आर वेरी केयरलेस। तो ये चीज़ों का बस आप ख़्याल रखें। और जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल थी, ट्राई टू कीप इट। अब क्या होता है कि लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे आप अपना यूज़र नेम जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। अब उनकी प्रोफ़ाइल थी जैसे बुरहान डैश मेहदी में लिखा है, आगे इतना लंबा पूरा नाम है। तो आप सिंपल जो है अपना यूज़र नेम वहाँ पे सिक्योर कर लें, जो भी लिखना है, ताकि अगर किसी रिक्रूटर ने आपको सर्च भी करना है तो दैट दैट शुड बी वेरी ईज़ी कि वो आपका जो यूज़र नेम डाले और ईज़िली उसको जो है सर्च कर ले। अच्छा जी, अगेन जो भी मैं आपसे मेंशन कर रहा था कि जी के CV इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन के आप जो है इवन इफ़ यू आर स्टडिंग एट लम्स और IB और LSE, तो अगर इसमें टाइपोज हैं, इसमें जो है डिटेल सही नहीं लिखी हुई, तो वी माइट नॉट कंसिडर यू फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है? और उसके बाद जो है लाइक वी सी कि जी कि आपने अपने स्किल्स जो है मेंशन नहीं किए होते, कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी देखें तो उन्होंने अपने जो है कोई स्किल्स मेंशन नहीं किए हुए, मे बी जो है दे हैव मेंशन स्किल, बट फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग दैट्स नॉट अ स्किल, ठीक है? या लीडरशिप या कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल्स दैट्स मोर ऑन के जो है कि आपने जो है आपके हार्ड कोर स्किल्स क्या हैं, ठीक है? तो वो अगर आप उसमें मेंशन करते हैं, और अगर आप अपनी जो है CV को जो है थोड़ा-सा आप इसको अगर आप कस्टमाइज़ कर सकें, दैट वुड बी रियली ग्रेट। के जो है आप क्या करते हैं कि आप एक CV बना देते हैं और उसी को जो है आप हर जगह भेज रहे होते हैं, ठीक है? एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसके अंदर कीवर्ड्स ज़रूर ऐड करें, क्योंकि क्या होता है कि जो है ना, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वो कीवर्ड्स, क्योंकि हमें पता होता है कि जी कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो जब हम वो कीवर्ड्स देख लेते हैं, तो हम कहते हैं कि यार जो एटलीस्ट इनको जो है ना इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए, ठीक है? तो ये जो है, और द लास्ट थिंग कि जी के अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, ठीक है? तो क्योंकि हमारे पास CV आते हैं जो है जिसमें उन्होंने बड़े जो है ना यूनिक से जो है ना वो ईमेल एड्रेसेस लिखे होते हैं, ठीक है? तो ट्राई टू कीप इट प्रोफेशनल, आपका नाम से हो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा एक जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। Again, before interview, you have to be punctual, you have to be confident, you have to ensure कि आप जो है कंपनी के बारे में पढ़ के जा रहे हैं। क्यों क्या होता है कि आप जब, क्योंकि व्हेन आई वाज इन कॉल सेंटर, मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जी कि आपने जो है ड्राइव अपने हाथ में रखनी है, बिकॉज़ वी यूज्ड टू हैव लाइक 80 सेकंड के अंदर आपने कॉल ड्रॉप करनी है। और अगर आप कस्टमर की बात सुनना शुरू कर दें, तो कस्टमर की तो प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती, उनकी विशेस खत्म नहीं होती। तो इवन इन इंटरव्यू, तो आपने जो है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने उसको वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे आपके ज़्यादा जो है यू आर स्ट्रॉन्ग एट, और आप उसमें फिर अपनी कंपनी और उसमें फिर आप उसको कोरिलेट करेंगे कि जो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है और कंपनी है, या जो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। और अगेन हमारे पास जब लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, उसमें क्या होता है कि जी कि लाइक द बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट,
तो यू शुड नॉट बी वेरी पैसिव, ठीक है ना, तो यू शुड बी वेरी एक्टिव, बट यू शुड मेंटेन अ बैलेंस, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर हो, कि और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसिव, क्योंकि लाइक आफ्टर इंटरव्यू व्हेन वी डिस्कस, हम क्या कहते हैं कि जब हम डिस्कस करते हैं कैंडिडेट के बारे में कि लाइक व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कि यार कि शुड वी हायर हिम और हर, हम क्या, और क्या होता है कि यार नहीं यार, इसमें से जो है ना वो वाइब्स नहीं आ रही, या बॉडी लैंग्वेज जो है ना बहुत जो है वो दैट इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी कल्चरल फिट फॉर अस, क्योंकि जो है तो जो वी यू हैव टू इंश्योर कि जी कि आप यू आर वेरी अटेंटिव एंड यू आर proactive, you are responding to the questions and even you are asking questions, so it should not be just कि जो है अगर वो आपसे कुछ, अगर उन्होंने आपसे ए पूछे तो आप ए ही बताएं, आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके, बिकॉज यू हैव टू इम्प्रेस देम, यू हैव टू शो कॉज योर नॉलेज दैट लाइक यू हैव द स्किल्स। तो इस चीज़ का जो है आप ज़रूर ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय, and then how you build professional branding. For example, this is my LinkedIn profile. So try to get as much as possible endorsements from your colleagues, from your teachers. For example, uh, like for example, this Umar Khan, he was my manager in Telenor, Myanmar. He's now a country manager for Visa Pakistan here. Uh, so this is how, because whenever we apply any position, तो लोग आपकी प्रोफाइल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं, एंड देन सी के जी के आपने कमेंट क्या किए हुए हैं, कौन सी पोस्ट आप लाइक करते हैं, लोगों ने आपके बारे में क्या लिखा है, तो एंड देन दे पीपल ट्राई टू हायर यू। एंड द लास्ट थिंग बिफोर आई कंक्लूड, दैट इज अ डिजिटल फुटप्रिंट। so that is very important कि जो है यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जो है सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, तो जो है क्या आप कमेंट कर रहे हैं, बिकॉज लाइक यू गाइज आर स्टूडेंट, बट आपने एक दफ़ा कुछ कमेंट कर दिया, कुछ भी आपने एक्टिविटी कर दी, वो जो है हमेशा रहती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल के जी के दे शुड नॉट बी एनी हेट स्पीच, यू आर नॉट लाइक डूइंग एनीथिंग जो है। आई गिव एग्जांपल, इवन हमने जो है अपने एमबीए में एक केस स्टडी भी पढ़ी थी पीपल मैनेजमेंट के कोर्स में, कि लाइक अ गर्ल, she graduated from the Stanford, and she wanted to apply for a company, and the US luxury brand, they wanted to expand in China. तो बट जो है जब कंपनी ने सर्च किया तो उन्होंने देखा कि जी कि वो लड़की ने एक दफ़ा चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और उस बात को भी कोई 10-15 साल हो चुके थे, एंड देन दे वर इन अ फिक्स कि जी कि शुड वी हायर हर, यस और नो, एंड देन व्हाट दे डिड के they didn't hire her, they didn't send her to China, but they hired her as a consultant, कि वो जो है वो उनको जो है एज अ कंसल्टेंट के तौर पर उनको गाइड करते रहे, तो बिकॉज लाइक दे न्यू के जी के इफ दे हायर हर, सेंड हर टू चाइना, और कल को कोई न्यूज़ निकल आती है कि जी किसने इतने साल पहले लाइक शी वॉज अगेंस्ट चाइना, तो दैट कुड हर्ट देयर द ब्रांड। तो यू गाइज हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल के जी कि आप जो है लिंक्डइन पे क्या करें, अगेन आप जो है हैव आई बीन प्रॉन पे जाके आप चेक कर लें कि जी कि आपका जो है कोई ऐसा तो नहीं कि आपका डाटा जो है कोई ब्रीच हुआ हो, तो अपनी जो है अपना नाम लिख के गूगल पर सर्च करें, कम से कम फर्स्ट 10 पेजेस देखें कि जी कि आपके नाम से क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, एंड देन ट्राई टू डिलीट थिंग्स विच यू फील दैट विच आर नॉट अप्रोप्रिएट। और अगर आपको कोई, आपने जो है बचपन में हमने काफ़ी अकाउंट बनाए होते हैं, तो कोई ऐसा अकाउंट जो आप यूज़ नहीं करें उसको डिलीट कर दें, एंड देन ट्राई टू हैव अ सेकेंडरी अकाउंट। जो है क्या होता है कि आजकल हमने देखा है कि जी कि हर चीज़ के लिए आप कहते हैं जी लॉग इन विद गूगल, ठीक है, तो आप उसको जो है वो गूगल के साथ जो है आप उसको करें, और प्राइमरी अकाउंट जो है अपना जो है आपका वो अपनी ईमेल कोरस्पॉन्डेंस वगैरह हर चीज़ के लिए वो रखें, तो and again stay private. So this is the suggestion and recommendation which I have. Any question that you guys have, I'm happy to answer. Yes, sir. Yes, Mohammed Asad. So मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि I also did an internship actually at a digital bank कुछ अर्से पहले. So I was in the product research department and I really got a good outlook of the global financial markets उसमें. तो मुझे एक चीज़ जो थोड़ी सी concerning लगी थी वो ये थी कि पाकिस्तान में no one really focuses on like maybe working towards making all of these things जो products offerings हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा
accessible for people with like disabilities, for example. जिस तरह आपने अभी जो बात कर रहे थे about simplified UI UX, like that's a great thing to do. लेकिन मोस्टली इस तरह की कॉन्वर्सेशन में लोग फिर वो नहीं बात करते कि मे बी लाइक इफ समवंस ब्लाइंड तो कोई वॉइस कमांड्स के लिए एक अच्छा रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, मे बी फॉर द ओल्डर पीपल लाइक मे बी सर्च बार जैसे टूल्स थोड़े बहुत डाल दें. लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज दिस समथिंग पीपल आर वर्किंग ऑन या एक थोड़ा निग्लेक्ट हो रहा? असल देखिए प्रॉब्लम ये है कि जी कोई चीज़ डेवलप करने के लिए ना उसपे कॉस्ट जो होती है ना एसोसिएटेड होती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लाइक दीज आर द गुड इनिशिएटिव बट प्रॉब्लम ये है कि जी वी व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग एनी प्रोडक्ट वी हैव टू क्रिएट अ यूज केस, बिजनेस केस बनाना पड़ता है कि जी किसी कितने कस्टमर हैं, टोटल कस्टमर हैं, कितना हमें इसका रेवेन्यू आएगा, कितने अरसे बाद हम इसको ब्रेक इवन करेंगे, क्योंकि लाइक इवेंचुअली हम जो है चैरिटी नहीं कर रहे, वी आर हियर टू अर्न प्रॉफिट। तो व्हेन वी सी कि अच्छा यार इसमें सिर्फ कस्टमर ही फॉर एग्जांपल जो है 2000 है, 5000, 10000 है या 50000 है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि जो है आप इतने $1000 जो है किसी चीज़ पे लगाते हैं। तो ऑन अ वैल्यू एडेड सर्विसेज यस, इस पे काम हो रहा है बट इतना एग्रेसिवली काम नहीं होता, क्योंकि जो जब बिजनेस केस बनाने की बात आती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो ये काफ़ी जो है ना डिप्रोटाइज हो जाता है ये चीज़ें। ऑलराइट, गॉट इट. जी अहमद। Yes, Ahmed. Okay, anybody else? अच्छा मैं सॉरी आई जस्ट द चैट नाउ, तो देयर वाज वन कमेंट फ्रॉम द मरियम के लाइक should I recommend तो देखिए I will not suggest you to go to the data privacy and the cyber security because you have not graduated, you have not studied CS। तो आप जो है जो आप कुछ कोर्सेज करके जो है उसको ज्वाइन भी कर लेंगी बट अगेन आप स्ट्रक हो जाएंगी, ठीक है? आप मैक्सिमम क्या होगा कि आप मैनेजर लेवल तक चले जाएंगे, उससे आगे जो है देयर इज नो ग्रोथ। तो बिकॉज व्हेन यू गो टू द सीनियर पोजीशन यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी कि जी के हमारी जो है कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या हमें जो है डेटा वेयर हाउस इन हाउस करना है, आउटसोर्स करना है, हमने क्लाउड पे जाना है, क्या करना है, ठीक है? और वो जब आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो वो एंड आई गिव यू एग्जांपल व्हेन वी हैव टू गिव इंक्रीमेंट टू एनीवन वी डू द एवोल्यूशन ऑफ आवर कैंडिडेट। तो हम देखते हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मेरी टीम में एक बच्चा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज ए इंडिविजुअल एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिज वर्क, तो मैं क्या करूंगा कि जी के बट आई विल सी कि यार कि जो अगर मैं इसको प्रमोट करता हूँ तो क्या वो चीजें एग्जीक्यूट कर सकता है जो कि अगली जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, एंड द आंसर वुड बी नो, ठीक है? फॉर एग्जांपल तो व्हाट आई विल डू कि आई विल नॉट गिव हिम और हर अ प्रमोशन बट मैं उसको एक अच्छा इंक्रीमेंट दे दूंगा टू 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 मोटिवेट हिम एंड टू रिटेन हिम, बट मैं उसको प्रमोशन नहीं दूंगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जी कि फॉर बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, सो आप जो है इवन बैंक्स के अंदर जो है लीगल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि हमारे हमने जो भी हम जो है डील्स कर रहे होते हैं हम जो उसको जो है लीगल से वेट करवाए बगैर हम कोई भी एमओयू जो है एनडीए या कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते। तो दैट थिंग वन कुड बी कि आप अगर जो है आप वैसे लॉ प्रैक्टिस नहीं करना चाहती तो आप जो है किसी फर्म जो है आप बैंक को ज्वाइन कर सकती हैं, अदरवाइज जो है आप प्रोडक्ट में जा सकती हैं, कस्टमर सर्विस कस्टमर एक्सपीरियंस में जा सकती हैं, स्ट्रेटेजी में जा सकती हैं। सो बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप किसी टेक साइट पे जाएं बिकॉज वो ग्रोथ वाला एलिमेंट जो है वो मिसिंग होगा उसमें। अच्छा हाशिर का है जी कि हाशिर आई थिंक दैट इज अ सिमिलर क्वेश्चन दैट यू हैड कि जी बैंकिंग फाइनेंस रोल में आप बिल्कुल आप आ सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल दैट आई डिड माय बैचलर्स इन कॉमर्स, तो उसके बाद जो है तो फ्रॉम हेले तो फिर मैं बैंक में हूँ, प्रोडक्ट में हूँ। तो प्रोडक्ट में जो है आप जो है कोर्सेज करें, जो है नेटवर्किंग करें, और अब तो माशाल्लाह से जो है आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो है वो जो है चैनल्स मिल जाते हैं कि जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि लाइक व्हेन आई वाज मूविंग फ्रॉम माय ऑपरेशंस टू प्रोडक्ट, मैंने जो है 2-3 लोग मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि यार इनसे मैंने सीखना है, तो उनको मैं रोज़ फ़ोन करता था कि भाई मुझे ये बता दो, क्योंकि मैंने कोर्सेरा पे भी कोर्सेज़ किए, मैंने यूडेमी पे भी कोर्सेज़ किए, बट अगेन इट्स अ वन वे।
तो क्या होता है कि जी आप सीख रहे होते हैं, बट देन देयर आर सम क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड, तो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उनके आंसर पता हो। तो वो तभी होता है कि जी कि अगर आप जो है लोगों से जो है इंटरेक्ट करें, तो ट्राई टू हैव नेटवर्किंग, ट्राई टू गेट ट्राई टू आइडेंटिफाई पीपल जिनसे आप कुछ सीख सकें। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर विद इन पाकिस्तान, वुड यू टेक? देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ गुड थिंग अगेन। जो है आप अपनी फील्ड के ही होके रह जाते हैं। आप जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सैलरीज अच्छी हैं, बोनसेस अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छे आते हैं, बट जो है फिर आप जो है आप इन्वेस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। तो आप ये चीज़ देख लें कि क्या होता है कि जी फॉर एग्जांपल आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में एक ही हेड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और बैंक पाकिस्तान में कितने टोटल 53 बैंक हैं टोटल, ठीक है? तो ऑप्शंस जो है वो कम हो जाती हैं। तो अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अच्छी है, बट अगेन यू हैव टू डिसाइड कि जी कि व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन, कि आपने कितनी जल्दी जो है ना ग्रो करना है अपने लिए आपने। Ahmed Ashar says, what are your thoughts on the future of student roles? Because most internships require students in their last year, but not earlier, much as Alpha, is this Alpha, ALFA हाँ जी। lead हुँ। अच्छा नहीं, internship. देखिए मैं देखिए अगेन मेरे पास एक अलम्स की ग्रेजुएट स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया, एंड आई ट्राइड टू गेट हर इंटर्न इन अल्फला, बल्कि एक 2 लड़कियां और हैं अलम्स की हैं, वो इंटर्नशिप कर रही हैं मेरे पास यहाँ पे। तो अब तो बल्कि ए लेवल्स के बच्चे जो हैं इंटर्नशिप्स करने के लिए आ रहे हैं। तो अगेन द प्रॉब्लम व्हिच आई सी कि हमारी जो जेन जेन ज़ी भी नहीं बल्कि जेन अल्फा जो है बेसिकली वो ना दे वांट एवरीथिंग एट वंस, ठीक है? तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस। सो अगेन प्लीज़ टेक माय कमेंट एज़ अ पॉजिटिव, सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू। तो क्योंकि जो है ना like for them they wanted to have a very high salary, they wanted to have they wanted to work in a multinational, they wanted to have everything। तो आप ये चीज़ देखें कि जी पाकिस्तान में लिमिटेड जो है कंपनीज हैं, और कितने जो हैं हर साल जो है स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक यू स्टार्ट विद द बेसिक एंड देन यू चेंज, जैसे ही आपको अपॉर्च्युनिटी मिले आप चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल इफ यू सी माय प्रोफाइल, मैंने जो है आई स्टार्टेड विद अ कॉल सेंटर। तो लाइक आई डिडंट आस्क क्या कि नहीं मुझे जो है ना कि एक अच्छी ही जॉब ही चाहिए, बट जैसे ही मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, ठीक है, मैंने फ़ौरन स्विच किया। और एंड अगेन बिकॉज़ यू गाइज़ आर यंग, सो डोंट गो फॉर मनी, ठीक है? मेरी जो पहली जॉब थी दैट वाज़ अप्रॉक्सिमेट 15,000। जो दूसरी जॉब मुझे अगेन मुझे एक टेलीनॉर से ऑफर हुई थी दैट वाज़ फॉर 45,000 कॉल सेंटर में 2009 में, बट आई प्रेफर टू जॉइन ईज़ी पैसा एंड 20। तो और अल्लाह का शुक्र है कि जी दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि आई टूक अ राइट डिसीजन, आई डिडंट गो फॉर मनी। तो और अल्लाह का शुक्र है कि नाउ आई एम अर्निंग बहुत अच्छा कमा रहा हूँ मैं। तो ये तो जो है कि हर चीज़ जो है एक टाइम पे मिलती है, बट यू गाइस हैव टू बी एम्बिशियस, यू गाइस हैव टू सेट सम गोल्स कि जी आपने ये अचीव करने हैं, उसके लिए आप मेहनत करें। अब क्या होता है कि लोग जो है थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वो मेहनत नहीं करते। लाइक मैं इस एज में आके एग्ज़ेक्टिव एमबीए कर रहा हूँ, और लम्स का एग्ज़ेक्टिव एमबीए सो डिफ़िकल्ट, ठीक है? कि लाइक लिटरली आपको डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना पड़ता है। सैटरडे, संडे आप जो है यूनिवर्सिटी में होते हैं, बल्कि फ्राइडे भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, कभी तो मंडे भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल लिटरली ख़त्म हो जाती है। एंड सम टाइम आई फ़ील कि यार कि मैंने ये किस जगह पंगा ले लिया है मैंने, बट अगेन आई नो दैट इट विल पे मी ऑफ। तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। तो अगेन आई विल सजेस्ट कि जी कि बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? और जो है बहुत ज़्यादा जो है ना अभी इनिशियली अपनी एक्सपेक्टेशन हाई ना रखें, ठीक है? एक दफ़ा आप इंडस्ट्री में इन हो जाएँ, उसके बाद फिर आप जो है ना फिर आपको लोग जानने लग जाते हैं, और फिर आप जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है ग्रो करते हैं। एनीथिंग एल्स, एनी अदर कमेंट दैट यू वांट टू डिस्कस? Yes, any other questions before we end this session?
this amazing informative session. Thank you, Yusra. I think you have pretty much covered everything. We have a message. Thank you so much for the answer and the ठीक है seminar जी, as a whole. thank you so much. Thank you so much for joining, everyone. Thank you, Yusra, for arranging this and giving me. Yeah, sure. You can reach Thank out to you. me over LinkedIn. That's perfectly fine. Thank you so much, everybody, for your presence. Thank you, Thank you, Burhan. Ji. Thank you, Ji. Khuda Okay, Hafiz. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.